Hello students, today's topic of our lecture is median, quartiles, upper quartiles, lower quartiles, interquartiles and range. First of all, if we talk about a median, median is basically the middle or the center value of any of the ungrouped data or the group data. Before than that, just go through the topic that is basically the mean, median and mode. मीन मीडियन एंड मॉड जो है वो हम बेसिकली जो डिस्कस करते हैं दीज थ्री टॉपिक्स आर डिस्कस इन द स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब एवरेज निकालने की बात की जाती है तो हम ये तीन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं दैट इज मीन मीडियन एंड मॉड if we talk about the median is exactly the middle or the central value of any of the data either it is the ungrouped data or the group data अब क्वेश्चन ये अराइज होता है what is basically the ungrouped data the representation of data tell us about two types of data number one is ungrouped and the second one is grouped. So ungrouped data is basically is in the form of raw data or is in the form of a frequency with the frequency basically, and this is in the form of class interval. अनग्रुप डेटा जो होता है जिसके अंदर रॉ डेटा की बात की जाती है आइदर विद द फ्रीक्वेंसी और विदाउट द फ्रीक्वेंसी तो रॉ डेटा के अंदर मेरे पास नंबर्स जो होते हैं इसके अंदर यहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं होती कंटिन्यूटी नहीं होती वो नंबर्स आपस में क्या होते हैं किस तरीके से हो सकते हैं विद द सेम इंटरवल लाइक 2 4 6 10 अब यहाँ पे इंटरवल चेंज भी हो सकता है जैसे 2 4 6 10 12 18 24 इस तरीके से ये आपस में नंबर्स होते हैं ठीक है इनके दरमियान बीच में कंटिन्यूटी नहीं होती these numbers or the group of numbers are known as the ungrouped data raw data क्या चीज होती है इन नंबर्स को अगर मैं haphazard लिख दूं like 12 14 sorry 12 24 10 2 18 6 4 अब इन नंबर्स को मैंने haphazard करके लिख दिया है these group of data is known as a raw data एक raw data मेरे पास मौजूद है ठीक है तो अब आपके पास जो है जब भी अनग्रुप डेटा की बात की जाती है तो रॉ डेटा मेरे पास मौजूद होता है इधर विद द फ्रीक्वेंसी और विदाउट फ्रीक्वेंसी ठीक है अब दूसरे टाइप की जो हमारे पास डेटा होता है दैट इज नोन एज द क्लास इंटरवल और द ग्रुप डेटा जिसको लिखा किस तरीके से जाता है लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गया क्लास इंटरवल एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी मेक श्योर कि जब भी ग्रुप डेटा बनेगा इट मस्ट हैव फ्रीक्वेंसी विद इट अनग्रुप डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती बट विद द ग्रुप डेटा इट मस्ट बी हैविंग फ्रीक्वेंसी इन इट ठीक है तो 10 till 20 फॉर एग्जांपल हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी 5 देन 20 till 30 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 4 30 till 40 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई मेरे पास 8 लाइक समथिंग ठीक है अब यहाँ पर मेरे पास आप देखें तो यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हुई 10 से और एंडिंग पॉइंट जो आ गया दैट इज 20 और जो एंडिंग पॉइंट है वही यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ठीक है तो ये मेरे पास बेसिकली कंटिन्यूअस डेटा है तो ये आपके पास ग्रुप डेटा की फॉर्म में आ गया अब जो मेरे पास डेटा होता है इट कैन बी डिसकंटिन्यू ये मेरे पास क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यू डेटा की फॉर्म में भी हो सकता है लाइक अगर मेरे पास क्लास इंटरवल यहाँ पर है 10 till 19 and 20 till 29 then 30 till 39 अब यहाँ पे 19 पे अगर यहाँ पे एंड हो रहा है तो 20 से स्टार्टिंग हो रहा है तो यहाँ पे इसको आगे मूव ऑन करने के लिए हम यहाँ पे जो बनाते हैं वो बनाते हैं क्लास बाउंड्रीज और क्लास बाउंड्री के अंदर हम क्या करते हैं 0.5 लोअर जो हमारे पास वैल्यू है लोअर बाउंड्री है इसमें से 0.5 माइनस करेंगे और अपर बाउंड्री में 0.5 ऐड करेंगे सो इफ वी विल सबट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम द लोअर वैल्यू इट विल बिकम 9.5 और ये बन जाएगा ऐड करने के बाद 19.5 सिमिलरली यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे 0.5 इट विल बिकम 19.5 और यहाँ पे अगर ऐड करेंगे इट विल बिकम 29.5 सिमिलरली यहाँ पे आ गया तो 29.5 and it will become 39.5 so if we now go through with the data तो जो यहाँ पर एंडिंग पॉइंट आया है वही मेरे पास यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है सिमिलरली जो यहाँ पर एंडिंग पॉइंट है वही मेरे पास यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है बट क्लास बाउंड्रीज कब बनती हैं जब मेरे पास ग्रुप डेटा के अंदर मेक इट श्योर जब मेरे पास ग्रुप डेटा के अंदर जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंसेस आते हैं देन वी हैव टू गो थ्रू टू द क्लास बाउंड्री अगर यहाँ पर मेरे पास जो है डिफरेंसेस नहीं है तो मुझे यहाँ पे क्लास लाइक
दिस डेटा जो हमारे पास से प्रीवियस हमने लिखा है 10 till 20, 20 till 30 एंड 30 till 40, तो यहाँ पे क्लास बाउंड्री की कोई नीड नहीं है. दिस काइंड ऑफ डेटा इज बेसिकली नोन एज द ग्रुप डेटा. ठीक है, जो हमारे पास क्लास इंटरवल होती है विद द फ्रीक्वेंसी. सही है. सो नाउ यू हैव understood about these two type of data, that is ungrouped data and group data. Okay, moving on, if we talk about the median, we can find out median in both the data, that is ungrouped and grouped data. ठीक है, but in this lecture we are talking about the ungrouped data without frequency. The ungrouped data without frequency, this type of data is known as a raw data. And first of all, you have to convert this raw data into an array. Make it sure, remember the word array. Array क्या चीज होती है यहाँ पर? If we arrange the data from ascending to descending or from descending to the ascending order, the raw data will convert into an array. ठीक है, तो यहाँ पर जो मीडियन के अंदर है हम क्या करते हैं, असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ अपने डेटा को अरेंज करते हैं, और अरेंज करने के बाद जब जो डेटा हमारे पास आता है, दैट डेटा इज नोन एज एन एरे. तो अगर मैं इसे अरेंज करता हूँ, इट विल बी लाइक the smallest number is 51, then 54, then 63, 64, 66, 70, 72, and 80. So numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो अब ये मेरे पास जो रॉ डेटा था, it is converted into an array. Now I can apply the any of the formula. Either it can be median, mean, mod, quartiles, upper quartiles, or any of the formula. Without making an array, we won't be able to get the exact answer. So if we want the correct answer, we have to convert the raw data into an array first, and then we have to apply the formula, any of the required formula. ठीक है, तो यहाँ पे अब मूव ऑन करते हैं, मीडियन की बात करते हैं. The formula for median in the ungrouped data without frequency is n plus 1 divided by 2 th. So n is basically the total numbers, that means the quantity or the numbers, total numbers. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus 1 divided by 2 will give me 9 upon 2 is equal to 4.5 value. Now we have to identify the 4.5 value. 1, 1, 2, 3, 4. This is your fourth value and this is your fifth value, and 4.5 will lie over here. So अब मेरे पास 4.5 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है. So if we end up with 64 plus 66 divided by 2, my answer will be 130 divided by 2. And if we cancel out, so 65 is the median. I hope this part is clear. ठीक है, तो ये हमने इस डेटा के अंदर रॉ डेटा हमारे पास गिवन था. रॉ डेटा को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एरे में कन्वर्ट किया, और एरे में कन्वर्ट करने के बाद वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला होता है n plus 1 upon 2. So n is basically the total numbers. 8 plus 1 divided by 2 is equal to 9 upon 2 is equal to 4.5 value. Since 4.5 is lying in between the data, तो fourth and fifth value को दोनों को ऐड करेंगे, divided by 2 करेंगे, we will end up with the final value of median, that is 65. 65 is exactly the middle or the center value of this given data. ठीक है, so I hope ये आपको clear हो गया median. Moving on to the next topic, that is quartiles. So if we talk about quartile, तो क्वार्टाइल के अंदर भी जो सबसे पहली चीज है, मेक इट श्योर एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि हमने सबसे पहले अपने रॉ डेटा को एरे में कन्वर्ट करना है. रॉ डेटा को हमने एरे में पहले ही कन्वर्ट किया हुआ है, वी हैव टू मूव ऑन. सो क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला फॉर क्वार्टाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न व्हाट इज बेसिकली द क्वार्टाइल. इफ देयर इज अ डेटा
like this from A till B, ठीक है, ये मेरे पास एक डेटा है, and if we divide this data into 4 equal parts, this is Q1, Q2 and Q3. अब मैंने अपने डेटा को 4 हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया. दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, माय सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड माय फोर्थ पार्ट. ठीक है, 4 इक्वल हिस्सों में अपने डेटा को डिवाइड कर दिया. व्हाट इज क्वार्टाइल? क्वार्टाइल इज द वर्ड व्हिच इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड बेसिकली क्वार्ट. क्वार्ट मींस के हमने, क्वार्ट मींस 4 and we have divided our group data or the ungrouped data into the 4 equal parts. ठीक है, सो जो हमारे पास 3 नोड्स जिन्होंने अपने डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, दीज आर नोन एज Q1, Q2 एंड Q3. दैट इज क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3. क्योंकि क्वार्टाइल्स आपके पास 4 होते हैं तो इसकी जो नोड्स होती हैं उनकी 3 ही हो सकती हैं, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है. अगर उससे ज्यादा Q4, Q5 पे जाओगे, दैट मीन्स कि आपने अपने डेटा को 4 से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड कर दिया. जब 4 से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो वो अब क्वार्टाइल्स नहीं रहा. ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट Q1, तो Q1 का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है दैट इज n+1/4. जिस तरीके से हमने मीडियन में अपने डेटा की एग्जैक्ट वैल्यू, सेंटर वैल्यू निकालने के लिए अपने डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, तो क्वार्टाइल्स को हमने 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया, तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, तो अगर मैं Q1 यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो Q1 आपके पास क्या आ जाएगा, n is basically 8, 8 plus 1 is 9, 9 divided by 4th value. ठीक है, okay, so if we divide 9 divided by 4, we will get 2.25. ठीक है, and we all know that 2.5 lies in between 2 and 3. ठीक है, 2.5 जो आएगा वो कहाँ आएगा मेरे पास, इन दो नंबर्स के बीच के अंदर आएगा. सही है. नाउ so if we divide, if we add 54 and 63 as we have done in the median and divided by 2, so we will end up with the value that is 58.5. So our first quartile is Q1 is 58.5. Similarly, if you want to find out Q2, तो Q2 के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना. What you have to do, just the formula will remain same, n+1/4th value, but for Q2 you have to multiply it by 2. 2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है. सही है, तो अब आपने क्या करना है, आगे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ चेंजिंग्स आ जाएंगी. Like Q2 is equals to, okay, as we have gone through Q1 and we have received the value that is 58.5. So if you talk about Q2, the formula for Q2 remains same, but it will multiply it by 2. So n+1 divided by 4th value. तो यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा निकल के, 2, n+1 is 9 divided by 4th value. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2 into 2.25. तो इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 multiply by 2.25, that is 4.5 value, that is Q2. और 4.5 वैल्यू अब देखें आप कहाँ पर लाया करता है, it lies in between 4 and 5. 1, 2, 3, 4, that means this value and this value. इन दोनों को हम ऐड करेंगे, so 64 plus 66 divided by 2. तो हमारा जो आंसर आ जाएगा that is 6 plus 4 is 10, 130 divided by 2. और इसका जो हमारे पास आंसर आया that is 65. तो the value of Q2 is 65. ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, Q2. If we talk about Q3, so the formula for Q3 is
3 into n plus 1 upon 4th वैल्यू। तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 9 upon 4 is 2.25. When we will multiply 2.25 by 3, the value is 6.75. That is Q3 is equal to 6.75 value, and we all know that 6.75 value lies in between 6 and 7. So 6 and 7 value is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixth value and seventh value. So 70 plus 72 divided by 2. So 142 divided by 2 and 71 is the answer. 71 is the answer of Q3. ठीक है, Q3 हमारे पास क्या निकल के आ गया यहाँ पर 71. So now we have ended up with the three values, that is Q1, Q2 and Q3. So the value of Q1 is basically 58.5. The value of Q2 is 65 and the value of Q3 is 71. So now if we talk about the lower quartile, Q1 is known as the lower quartile. Similarly, Q3 is known as the upper quartile and Q2 is also known as the median. ठीक है, Q2 क्या है मेरे पास बेसिकली मीडियन है यहाँ पर, सही है। अच्छा, अब आपके पास Q1 लोअर क्वार्टाइल हो गया, Q2 is basically the median as we have calculated earlier, और Q3 हमारे पास था upper quartile. So now we have understood the topic median, quartiles, lower quartile. How can we find out lower quartile? How can we find out the upper quartile? So next target is the interquartile. So if we talk about interquartile, so interquartile is the difference between the upper quartile and the lower quartile. ठीक है, interquartile हमारे पास क्या चीज होती है? The difference between the upper quartile and lower quartile. So I can write it like interquartile is equals to upper quartile minus lower quartile. The value of upper quartile is 71 minus the value of lower quartile is 58.5. If we subtract 71 minus 58.5, we will get answer 12.5. That means interquartile is equals to 12.5. ठीक है, तो हमने यहाँ पर इंटरक्वार्टाइल भी निकालना सीख लिया कि अगर मैं अपर क्वार्टाइल से लोअर क्वार्टाइल को सब्ट्रैक्ट करूंगा, वी विल एंड अप विद द इंटरक्वार्टाइल. नाउ इफ वी टॉक विद इन द डेटा, तो डेटा के अंदर हमने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी वैल्यू कहां पर है, सही है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक चीज ये देखी, वी हैव एंडेड अप विद द वैल्यू 58.5 जो हमारे पास कहां लाया कर रही थी, बिटवीन दिस इज नोन एज Q1. Q2 हमारे पास कहां आया था, इज इन बिटवीन दिस जो हमारी वैल्यू थी 65, दैट इज Q2. और Q3 क्या आ रहा था 71 विच लाइज इन बिटवीन दिस, दैट इज Q3. तो हमने इंटरक्वार्टाइल निकालने के लिए क्या काम किया, हमने इंटरक्वार्टाइल निकालने के लिए Q3 और Q1 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिए. जब Q3 में से Q1 को सब्ट्रैक्ट किया, वी हैव एंडेड अप विद द वैल्यू ऑफ इंटरक्वार्टाइल. क्लियर? नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रेंज, तो रेंज आपके पास क्या होती है, रेंज इज इक्वल्स टू द अपर limit minus lower limit. तो upper limit is basically upper limit of the whole ungrouped data. तो upper limit मेरे पास ungrouped data की क्या है यहाँ पर 8 and the lower limit is 51. So if we subtract 80 or that is 51. So 80 minus 51. If we subtract 80 minus 51, we will end up with the value 29. That is the range of this ungrouped data.
Clear? So now we ended up with the lecture. Like in today's lecture, we have to discuss about the interquartile, lower quartile, upper quartile, range, median, and quartiles. We have discussed all these topics. I hope this lecture helps you a lot. And if you have any query regarding, you can ask me in the comments. हम उसे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी उसे रिजॉल्व कर लें. And now we will meet inshallah in the next topic, that is basically the cumulative frequency. Thank you so much.